हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिलोगिज्म के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, खास करके वनली वनली अ फ्यू। और उसके साथ हम एक एग्जांपल लेंगे जिसमें 6 स्टेटमेंट्स होंगे और उसके साथ बहुत सारे कंक्लूजन्स होंगे। उसके वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे और वन बाय वन सारे कंक्लूजन्स को देखेंगे कौन सा फॉलो करता है कौन सा नहीं करता है। सो स्टार्ट करते हैं वनली अ फ्यू के कॉन्सेप्ट से। Concept of only in syllogism. For example, only A or B. It means all B are A such that B can be only part of A. आप कंफ्यूज हो सकते हैं, जैसे all B are A, सिर्फ ये अगर स्टेटमेंट होता है all B are A और only A are B में ये डिफरेंस है कि only A are B में B cannot be part of any other element. B सिर्फ A का ही पार्ट होगा। और ऑल बी आर ए अगर स्टेटमेंट है उसमें बी कैन बी पार्ट ऑफ अदर एलिमेंट ऑल्सो। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट ओनली ए आर बी मीन्स ऑल बी आर ए एंड दिस बी कैन नॉट बी पार्ट ऑफ एनी अदर एलिमेंट apart from A. This is all about only. Now we will move to only a few. Only a few is also called only few. Only a few बोले या only few, both are same. Only a few A or B means it means some part of A or B. That means all A cannot be B. That means there are some restriction on A that over B, but there is no restriction of B over A. All B can be A, but all A cannot be part of B. सिर्फ थोड़ा पार्ट ऑफ ए बी है बस, और सारा बी ए हो सकता है। सो बी क्लियर अबाउट दिस कॉन्सेप्ट। इट मीन्स ओनली सम पार्ट ऑफ ए आर बी एंड ऑल ए कैन नेवर बी बी, बट ऑल बी कैन बी ए। सो दिस इज ओनली अ फ्यू। अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे जिसमें ओनली और ओनली अ फ्यू और बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं। स्टेटमेंट्स हैं ओनली ए आर सी, ओनली अ फ्यू बी आर ए, ओनली अ फ्यू जी आर बी और नो बी आर डी, ऑल ई आर डी, सम ई आर एफ। इसके साथ हम वेन डायग्राम ड्रॉ किए हैं यहाँ पे। यू कैन सी इसका डायरेक्ट वेन डायग्राम ये हुआ। जैसे मैंने कहा ओनली ए आर सी मीन्स ऑल सी आर ए, एज यू कैन सी इन द डायग्राम ऑल सी आर ए, and mind it, C cannot be part of any other element. Okay, and one similarly हम लोगों ने draw करा only a few B R A, and see the part between A and B is shaded just to make you understand that it is not some B R A, it is a concept of only a few. Okay, so this is the actual Venn diagram of these 6 statements. Now we have 10 different conclusions, and one by one we will see which conclusions follow and which conclusions don't. So we will move to the first conclusion. Well, the first conclusion is some C are B. Some C are B. It does not follow. Why? Because as the first statement says only A or C, that means C can be only part of A and part of no other element apart from A. So this conclusion does not follow. Okay, we will move to the conclusion 2. Conclusion 2 says all B being G is a possibility. All B being G is a possibility, yes, because only a few G are B. There is restriction over G, there is no restriction for B. So all B being A is a possibility as shown in the Venn diagram. This is the Venn diagram shown in this slide is the possible Venn diagram of these 6 statements. Okay, so this conclusion follows. We will move to the conclusion number 3. All G being B is a possibility. All G being B, no, it doesn't follow, because as the third statement says only a few G are B. कुछ पार्ट G का ही सिर्फ B है, सारा G B नहीं हो सकता. So this conclusion does not follow. We will move to the
conclusion number 4. Conclusion 4 says sum A can be G. Sum A can be G. Yes, as shown in the Venn diagram, sum A can be G. This is a case of possibility. Okay. Next conclusion is conclusion number 5. That is all G are not B. All G are all G are not D. See, all G are not D. It follows because see the shaded part between B and G, that shaded part is cannot be part of D. Okay, so all G are not D follows. Next conclusion is all F can be D. All F can be D. Yes, as shown in the Venn diagram, all F can be D. Next conclusion is conclusion 7. Some F can be C. Some F can be C. No, the reason remains the same. Only A or C. That means C can be only part of A and F cannot be part of C. So this conclusion does not follow. Next conclusion is conclusion 8. All A can be B. All A can be B. No, again the same reason. C can be only part of A. If we are making this possible, then C will become a part of B, which violates the condition of only A or C. All A can never be B. Okay. Next conclusion is 50% FRD. 50% FRD. No, exactly 50%. We can't say exactly 50% FRD. So this conclusion does not follow. Okay. Next conclusion, the last conclusion is 50% F can be D. This is the case of possibility. Yes, why not? It can be 20% or 10% or 50%, 80%. F can be D. Some F or D means it can be 10%, 20%, 50%, or whatever percent. That's why 50% F can be D follows. So this is all about the 10 conclusions, and this is the brief conclusions, brief all about all the conclusions that which are following, which are not. I hope आप लोगों को only a few और only का concept समझ में आ गया होगा. आपने देखा होगा कि स्टेटमेंट से वेन डायग्राम मैंने ड्रॉ करा. वेन डायग्राम से मैंने कंक्लूजन्स फॉलो किया, कुछ कंक्लूजन्स फॉलो नहीं किया. ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा. तो ये चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए प्रैक्टिस मॉक का. थैंक यू, ऑल द बेस्ट.